Hello children, in this video I will tell you about the chemical changes. In previous video I already told you about the physical changes, which is the effect of heat, that due to the heat various physical changes takes place, like change in temperature, change of state and thermal expansion. Now there are many chemical changes which only takes place when the reactants are heated. For example, if we have to prepare oxygen in the lab, so we have to heat the reactant. We have to heat potassium chloride and manganese oxide over the flame. Then only we can prepare oxygen. It means that various chemical changes takes place due to the presence of heat only. Now, we know that heat is a form of energy and temperature just indicates it. We often feel that we can estimate the temperature of the body by just touching it. We often touch the things and we say that it is very hot, it is very cold. If we take two things, an ice tray and a packet of frozen vegetables from our refrigerator, ice tray may appear colder to our hand than that packet. But we can just estimate कि एक चीज़ ज़्यादा ठंडी है, ये कम है, but it is not a reliable method. ऐसा नहीं है हम बिल्कुल सही टेम्परेचर बता देंगे कि ये ज़्यादा ठंडा है और ये कम, ये ज़्यादा चीज़ गर्म है और ये कम. We need a reliable method to know the hotness or coldness of anything. कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हमें एग्जैक्ट हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चले. फाइन. तो such an instrument which can give a reliable information about the hotness and coldness is thermometer. So let us see thermometer. Let us study about the thermometers. Now, thermometer is the simplest thermometer from which we are familiar, is just a reliable method to measure the hotness and coldness of any body. The simplest thermometer is mercury in glass thermometer, and it is based on thermal expansion of the mercury. In previous video I told you that things expand due to the heat. It is one of the physical effect of the heat. Similarly, mercury also expands on heat, and this is being used in this thermometer. Now, mercury in glass thermometer कैसा होता है आपने सबने देखा ही है. It is a narrow capillary tube of glass. Glass की एक ट्यूब होती है and it is closed at its upper end and has a bulb at its lower end. नीचे की तरफ जो होता है उसमें बल्ब होता है और ऊपर की तरफ जो है वो क्लोज होता है. बल्ब इज फिल्ड विद मरकरी. जो नीचे बल्ब होता है वो किससे भरा रहता है? मरकरी से भरा रहता है. इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वी कैन सी, अगर आप थर्मामीटर को ध्यान से देखें तो उसमें एक शाइनिंग थ्रेड नज़र आती है, वो मरकरी होता है. मरकरी इज प्लेस्ड इन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एंड mercury expands when bulb is heated, when mercury is heated. Now you know, when we feel that we are having fever, we keep that bulb in our mouth for 2 minutes. What happens if there is a heat in our body due to fever? It will expand the mercury placed in the bulb. और जितना हमारी बॉडी में हीट होगी उतना मरकरी एक्सपैंड हो जाएगा और उस नंबर तक, डिजिट तक पहुंच जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वी आर हैविंग सो मच टेम्परेचर इन आवर बॉडी, इजंट इट? तो दिस इज हाउ थर्मामीटर वर्क्स. नाउ, फॉर मेजरिंग पर्पसेस टेम्परेचर स्केल इज कैलिब्रेटेड टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू. टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, दो पॉइंट्स ले जाते हैं थर्मामीटर पे, लोएस्ट टेम्परेचर
and highest temperature are chosen. And the difference in the temperature of these 2 points is called the range of the thermometer. जो lowest temperature वो नाप सकता है थर्मामीटर, और जितना हाईएस्ट टेम्परेचर वो नाप सकता है, उन दोनों पॉइंट्स को रेफरेंस पॉइंट्स बोलते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? रेंज ऑफ द थर्मामीटर. डिफरेंट थर्मामीटर्स की डिफरेंट रेंज होती है. एंड द इंटरवल बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड नंबर और divisions. Two scales are very common, Fahrenheit and Celsius scale. So in next video we will study about the two different scales and how these scales, readings of these scales are converted into each other. Now